Good morning, dear students. Welcome to your English grammar class. Dear kids, from today onwards, we are going to start Super Test Assignment 2, right? Its theme is Famous Indians. What is the theme? Theme is Famous Indians. Alright. Now, first of all, you are having comprehension in it. Okay, you have to read this comprehension very carefully and you have to do it on your own. Okay, kids? I have solved it, but I will send you the PDF later on. Until and unless you will not do practice on your own, you will not be able to do it nicely in exams. Alright, let's start describing people. B part is your writing part where you have describing people. Okay, now children, we come across so many people in our life: parents, brothers, sisters, neighbors, friends, relatives, teachers, and strangers. We know how each one of them looks, speaks, walks, dresses, works, etc. When we tell someone about someone else's looks, behavior, and work, etc., we are actually describing him or her. ओके, नाउ व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, आपने बहुत सारे पीपल देखे होंगे जिनमें कि पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, कोई भी आ सकता है. ठीक है, आप उनको जानते हो कि वो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, कैसे ड्रेस पहनते हैं, कहाँ पर काम करते हैं. और जब आप वही चीज़ किसी दूसरे पर्सन को बताते हो, इट मीन्स कि आप उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो दूसरे पर्सन के सामने. ठीक है, अब आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? नेम, एज, लुक्स, एडुकेशन, ऑक्यूपेशन, ड्रेस, peculiar habits, manner of speech or walk, popularity among friends, neighbors, relatives, colleagues, and relationship with you. इन सब तरीके से आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि दिस पेन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, यू हैव टू डिस्क्राइब दिस पेन. सो व्हाट यू कैन से, दिस पेन इज़ ऑफ ब्लैक कलर. ऑल राइट, दिस इज़ ऑफ लक्सर कंपनी. then this is a ball pen. Like this you can describe it. Same ways you can describe the people also. Okay, here next see, in describing a person, use lots of descriptive words or adjectives. These words describe your topic clearly and make it more interesting. For example, instead of saying Ram Gopal is a postman of our area, we can say Ram Gopal is a friendly postman of our area. हमने एक सिंपल सेंटेंस बोला और अब हमने पोस्टमैन को कैसा बना दिया? फ्रेंडली पोस्टमैन बना दिया. इसमें हमने एडजेक्टिव को ऐड कर दिया है. ठीक है, इससे ये सेंटेंस जो है ऑर्नामेंटल सेंटेंस बन गया है. ठीक है, थोड़ा और अच्छा लग रहा है ये सेंटेंस हमें बोलने में. ओके, सबको समझ में आया होगा कि आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो. चलिए, नाउ लेट्स डू दी exercise. Rewrite the following sentences by adding the descriptive words given in brackets at an appropriate place. The first one has been done as an example. What you have to do, these adjectives are given in the bracket. Okay, you have to add these words in these sentences so that the sentence will become more beautiful. Like Barbie is a doll and you are having cute word here. So what is written? Barbie is a cute doll. जो नाउन है, नाउन से पहले आपको आपका एडजेक्टिव लगाना है. ओके, सेम वेज शंकर इज़ अ शॉपकीपर, ग्रीडी. ग्रीडी इज़ द एडजेक्टिव हियर. सो हाउ यू विल राइट? शंकर इज़ अ ग्रीडी शॉपकीपर. राइट चिल्ड्रन? देन यू हैव द कोबरा इज़ अ स्नेक, बिग. द कोबरा इज़ अ बिग स्नेक. दिस इज़ अ बुक and the adjective is new. This is a new book. This is a broken chair. Simon is my best friend. China is a powerful country. Vikram is a brave pilot. Chinku is a clever boy. Alright students, this you have to do it like this. If you are not able to write the sentences in the book, space is less, you can write this work in notebook also. Okay, you can do this work in notebook also. Now children, come on page number 24. This is your homework. Okay, take down brief notes on your looks, age, health, habits, studies, likes and dislikes in the table given below. This is for you. Okay, this page is for
you, what you have to do here, you have to paste a picture of yours. आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी है यहाँ पे. Then you will write your name, your class, your age, looks, then your health, what you like to wear, what you like to eat, hobbies, what are your hobbies, what you like to do in your leisure time. ओके आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो. देन डिसलाइक डूइंग, आपको क्या करना पसंद नहीं है. देन रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स. ओके दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, राइट किड्स. Then other part in next video we will cover. Till then, take care. Bye bye.